Audio Jungle. Sri Balaji Bajrang Sweet House, a world filled with sweetness, treasure of delicious sweetmeats. With the cooperation of customers and well-wishers, Sri Balaji Bajrang Sweet House is moving forward from the past 52 years, appeasing the sweet palate of populaces. My grandfather, Seth Sri Ratan Lal, started this business to bring a taste, good quality of sweets in Hyderabad. He came from Rajasthan. Now we are the leading sweet shop in Twin Cities, serving since 1970. Our motto is spreading sweetness. Sri Balaji Bajrang Sweet House was established in the year 1970 on 5th of July at Narayanguda, Hyderabad. The founder Sri Seth Ratan Lalji hailed from Rajasthan and settled down in Hyderabad, starting this venture with an invention to provide delicious and quality sweets to the city dwellers. Confectionery store has been successfully prospering by the descendants of Seth Sri Ratan Lalji. After my grandfather death, my father take the business handover. From that, I learned more and more things from my father. My father used to don't bring me in the showroom, but he should send me the kitchen to learn how to make sweets first. I worked nearly 9 years to 10 years in my kitchen. After that, I came to showroom. After seeing that how to make sweets, I have a confidence to sell the sweets because I have know what about the sweets. That's why I have the confidence. Every candy found in it is worth a dime. Dry fruit sweets, Kowa sweets, special Kowa sweets, ghee sweets, Bengali sweets, Andhra sweets and many more. హాయ్, నా పేరు యువిక. మా డాడీ ఇక్కడికి రెగ్యులర్గా వస్తుంటారు. మా డాడీకి సమోసా కచోరీ అంటే ఇష్టం, నాకు काजू बर्फी एंड इष्टम। मेरा फेवरेट है यहाँ पर समोसा, गरम समोसा जब भी रहता है। और वैसे रसमलाई, रबड़ी ये भी बहुत मेरी फेवरेट है। गुलाब जामुन भी बहुत अच्छा है, जिलेबी है वो भी बहुत ज्यादा खाता हूँ। Especially samosa and kaju barfi and ice cream barfi and rasmalai, those things are very special here. Eating them once makes one desire to have them again and again. Not only sweets, but there are also a variety of nourishing spicy Indian snacks. Along with them, you can also taste fresh baked bread, small buns, toasties, puff pastry, Usmania biscuits and moon biscuits. Sri Balaji Bajrang Sweet House uses high-quality ingredients for the preparation of sweets and other delicacies without compromising on the taste. बालाजी बजरंग में 20 साल में काम कर रहा। सेठ मेरा भाई जैसे देखता। हमारा ये इधर आया, मैं बहुत छोटा में आया, यहाँ से काम पूरा सीख के बड़ा हुआ। हमारा किचन पूरा छाप छपाई रहता, अच्छा रहता। हमारा पूरा हमारा बच्चा को सेठ, हमारा काम वाला बच्चा को पूरा घर वाला बोल के सोचता। हमारा क्वालिटी पूरा नंबर 1 क्वालिटी है। हमारा पूरा काजू बर्फी से ही बनता। हमारा ड्राई फ्रूट सैंडविच बहुत फेमस है। हमारा गुलाब जामुन पूरा प्योर घी से बनता, बहुत फेमस है। हमारा लड्डू पूरा प्योर घी से बनता, मुल्तान घी से बनता, फेमस है। हमारा कस्टमर, हमारा रश्मि सस्ता में लोग कस्टमर आएगा तो मैं लोग आगे बढ़ेगा। हमारा पहले बालाजी बजरंग पहले से और 51 साल का है, और पहले बढ़ाना चाहिए मैं लोग, और 50 साल चलना है मैं लोग का। हमारा और आगे हमारा मैं लोग नया नया आइटम कोशिश करेगा बनाने के लिए। बहुत से आदमी मंगा को बनाने की कोशिश करता। पूरा हमारा काजू, ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, पूरा बाइक वगैरह
केक मिष्टी बेगड़ी पूरा अपना है यहाँ पे। कुछ भी तो सूट जितना सूट है यहाँ पे बालाजी भाई रंग में है। नया सूट में लोग बनाता, पूरा साल में 10-12 नया सूट बनाता है। The suppliers of ingredients have been consistently supplying the same quality since past 50 years, which speaks about the maintenance of taste and importance that is taken to maintain the standards. This is the main reason why the customers continue to return, enjoying the flavors of the sweetmeats. Visited Balaji Bajrang many times and I have eaten all the sweets and even spicy items here, and it's very tasty and it's one of the very good places to visit to have sweets and spicy items. बालाजी बजरंग में 45 ईयर से आता हूँ। मेरे पिताजी के साथ पैदा हुए जब से मेरे आने की खुशी में यहीं से मिठाई गई थी, तो मेरे को इससे बहुत अटैचमेंट है। और यहाँ पर क्वालिटी जैसा मेंटेन होती, शायद ही हिमायत नगर रोड पे ये प्राइस और ये क्वालिटी कोई दे रहा है, उससे मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी आके यहाँ पर मिठाई खाते हैं दूर दूर तक। हम लोग अगर सिकंदराबाद जाएंगे, सैनिकपुरी भी जाएंगे, तो मेरे कई लोग हैं यहाँ पर मेरे घर से मिलने आए, जब वो लोग यहाँ से मिठाई खाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मिठाई रहती है यहाँ पर और क्वालिटी बहुत ही अच्छा मेंटेन करते हैं। I have been coming to Balaji Bajrang from past 5 years, and I think the relationship that I have built with the owner and even the customer representatives here, I think it has been awesome. I think every time I come here and take sweets, it gives me something like I am taking from my own store. That's the kind of feeling I have. The kind of interactions the customer representatives do here, it's really special. They feel me, they make me feel like homely, and they make sure that they are having a good interaction with me, which is something that I really feel amazing and which makes me come here again and again. That's one of the main reasons. I've been here for the first time, so I just always wanted to visit this shop. This is most famous ever sweet shop I have heard about, but I really love the food, and it was very delicious. It was just yum. I did really love them. Sri Balaji Bajrang Sweet House not only supplies in Hyderabad and Secunderabad, but also in other places within a radius of 300 kilometers, Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra. हमारा गर्व था फिल्म इंडस्ट्री में श्री नागार्जुना, श्री वेंकटेश, चिरंजीवी, जेडी चक्रवर्ती साहब, मोहम्मद अजरुद्दीन, हमारे एक्स कैप्टन जो विठलवाड़ी में रहते थे, उनको हमारी मीठी बूंदी बहुत पसंद थी। वो हमारे पिताजी से ले जा सकते थे। हमारे टाइगर नरेंद्र साहब, हमारे एक्स होम मिनिस्टर श्री नाया नरसिम्हा रेड्डी साहब, वेंकैया नायडू साहब, लक्ष्मण जी, ये सारे हमारे पास से मिठे ले आते थे। किशन रेड्डी साहब आते थे मिठे लेने, टी सुबीराम रेड्डी, पिंकी रेड्डी जी। मीना बाजार का हमारा रेगुलर सप्लाई था, जो वंदना फिल्म्स के नाम से बहुत मशहूर था। उनके घर में कभी भी अमिताभ बच्चन आता था तो हमारे पास से ही मिठाई जाती थी। पुनीत कैटर्स है, विष्णु भाई उनका नाम है, रामाया कैटर्स है, साई प्रिया कैटर्स है, प्रीमियम कैटर कमल अटल जी है, भवानी कैटर्स मुकेश भाई है, क्वालिटी कैट विनोद जी है, जैसा अरोरा है, लक्ष्मी चंद्रा है, रामाया है, साई प्रिया है, बालाजी कैटर्स है, और एक बालाजी कैटर्स जी रोहित अग्रवाल जी है, और विजयवाड़ा में जैसा प्रिया कैटर्स है, रायचूर में गुलाब कैटर्स है, रायपुर में श्री अभिनंदन कैटर्स है, गुलबर्गा में है मेरे कंवर साहब का श्री वेंकटलाल जी भाटी जी का। उनसे यही आशीष, यही प्यार मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए चाहता हूँ। राम जाने ग्रुप जो ग्रुप अल्टीमेट ग्रुप है, और मेरे मित्र, मेरे सगे संबंधी गुड्डू सेठ, सुनील गहलोत भी प्यार चाहिए और है और रहेगा। About 40 top caterers in Bhagyanagar are also serving sweets made by this organization, including popular hotels like Minerva and Blue Fox. Sri Balaji Bajrang Sweet House has significantly grown in the last 10 years, and the management has been aspiring to take it to the future by introducing Italian cuisine in the city under the banner of Desi Videsi, an Italian restaurant.
The venture is focused in expanding its branches in the Twin Cities in the near future. Myself, Anmol Panwar, and son of Sunil Panwar, and great grandson and grandson of Seth Sri Ratan Lal ji and Srinivas ji. Starting the Italian chain have inspired me through all the youngsters and my classmates, through which I have more interested in the Italian section. Nowadays I see people leaning towards the what we call the fast food side. Youngsters and the upcoming generations are always like interested in some fast food items like Italian, Chinese, but I have only concentrated on the Italian part. I am trying to bring out to the people is always of the Indian culture, and both Indian culture and of Italian. That's why my restaurant name is also called Desi Videsi. Every time I'm really focused on the outcome of the product. I must say you that you can try our items like tacos and the barbecue paneer, the fusion foods like paneer makhni and the pan fry momos, which I have been seeing going through the north side. My father has always teased me and told me, "Beta, तुम quality में ध्यान दो, तुम्हारा income वैसे ही अपने आप ठीक हो जाएगा." So I always focus on the quality. In the future, I'll be focused to expand this business throughout the city, like a new fusion of sweets combining the Italian restaurant. Sri Balaji Bajrang Sweet House has been sharing satisfying tastes with its customers for the last 5 decades, providing reliable services, infatuating their minds, standing as one of the top sweet houses in the Twin Cities. It has become an original address for the quality and lip-smacking flavors. Thank you so much to elders, well-wishers and customers. I want to thank to Hyderabad, given us place of name, frame and everything. Thank you very much.